Today's session is on diagrams in economics. So this is not the usual demand supply level diagram. This I have chosen some few diagrams which comes a lot in the entrance examination, but we don't see them properly drawn. Neither in Pindike, Rubenfeld or Ferguson Gold or the conventional statistics books. They are lagging that thing. Sorry, non-conventional economics book. Especially the problem with the foreign books, the diagram is they are based on some examples. And most of the cases, they try to draw it a linear diagram. Easy. But the questions they are doing, they are all non-linear cases. So here, remember that every economics diagram should be a non-linear representation for sure, first thing. And you need to know the basics, the intersection, the dots, the point, the joining, whether it will touch the axis or not, everything. Clear? So that's why today we will start with the diagrams in the world of economics. I'm very excited to teach you this part today. Let's see how much I make you excited at the end. I have, in order to save time, because it takes time to draw the diagram, so I have made a small list from different notes of the diagrams which I will be showing. Main सिर्फ diagram draw करने से ही तो नहीं होगा. You have to understand the diagram, you have to expand the diagram, you have to explain the diagram. The biggest problem of in the subjective right and even in the objective, both the cases is objective में क्या देता है, diagram दे देता है या फिर diagram के ऊपर सोच के ऊपर question देता है. They will ask you to think on this, that this will be a intersecting, SSC will not be intersecting LSE in the long run. So or simple Genshin model based diagram. One class I will do it with respect to micro, and the another few sessions will also be with respect to macro. Okay. Diagram special session. The mode will be mostly in English, but I will be saying in Hindi as well. What's the date? 12 July, sorry, June 2025. Here we go. It's almost a 57 pages long PDF. There are a lot of diagrams inside. Don't get scared. Okay. Can you tell me what is this diagram of? मजा आएगा आज की क्लास. किस चीज का डायग्राम? ADS. And hint is, yeah, it's with respect to macroeconomics. Intentionally, I am starting with a macro today. Micro मिला के ही है, ज्यादातर micro का ही. Okay. So this is a macro dynamic equilibrium and a tension adjustment process is being done. Tension adjustment. So Keynes ने क्या कहा? So this is the consumption here. Okay, basic consumption. What is T, T plus 1? ये सब क्या है? Huh? So he was the first one to introduce the time frame. Okay, and this is the adjustment mechanism. इस तरीके से adjustment आ रहा है. So whenever consumption function, what is the C plus I? Just a second. Hello. Hello. Normal, start with probability.
Okay. Sorry, I was a new student actually. Okay. So C plus I is the aggregate expenditure. Very basic aggregate expenditure in a market structure, and that we are trying to do. So consumption versus original investment is happening. So whenever this thing is happening here, so this 45-degree line is actually trying to show you C plus I plus delta I, this part. So now this is a tilted line. Why this is happening? So now people are thinking if we more invest into some kind of a product, so the product is giving us more and more and more things. So ultimately, the income level is going up. So the people is getting more invested towards it. So the economy is expanding, but in many of the cases, consumption level is only, so C plus I is the thing you need. So what you need, more C or more I? More I. For future, we need more I. For present, we need more C. So any economy which is a short-sighted economy, just an Indian economy, one of the most short-sighted economy. हर एक पॉलिटिकल पार्टी आता है और उसको अपना ही टाइम के हिसाब से कुछ करके लोगों को दिखा के निकल जाए. Okay, but long-sighted economy is like, far-sighted economy is like the Finland economy, Finnish economy, Norwegian economy, and in some cases, our most biggest enemy, Chinese economy. Okay. American economy, we cannot keep that example, or the example of European countries like German economy. ये सब ने बहुत पहले से ही they have got a lot of benefit and leverage. Okay, what do you say about the British economy? They got the leverage from the very beginning. They enslaved almost the entire world, and even the Americans were under. So for them, this kind of policies doesn't matter. All they have to stick to their old plan. Okay. First part is clear. So planned expenditure is greater than actual output. That is the issue. Okay. So this is the tension structure done. Yeah. Now this one is unusual. What is this diagram for? This time I have shown a thing which is very tough. What is bandwagon effect? Again, intentionally I have chosen those kind of stuff. जिसके ऊपर the topics which I have chosen in the beginning, because everyone has studied graduation में eco, so I am not going to teach you demand and supply. So even given good and inferior good, the difference is known, but how to represent in a diagram will come to that. So what is this bandwagon effect? Any idea? So when people get on, they buy things because it's in trend. Yeah. So consumer demand, something to do with the consumer's demand. Trending चल रहा है, खरीद लो, है ना? जैसे लूट लिपस्टिक. मेरे पास लिपस्टिक लगा है लेकिन समझ में नहीं है ना? लेकिन है. So previously it was called a thing called lip gloss. अब उन लोगों ने देखा lip gloss का दाम, you cannot charge like 250, 750, 1,000 rupees for a lip gloss. Why not just give it a new name? Okay, they come out with it. So this is shifting the demand graphs. You see the demand graph 20, 40, 60, 80, 100 तक right में चलो. Okay. So here demand curve corresponding to different consumer base size. This is the different consumer base size. Example देता हूँ. I got a Honda City. उतना अच्छा कार नहीं है, लेकिन अपने एरिया में भाई अपना कार एकदम किंग कार है, क्योंकि बाकी लोगों के पास मारुति ये सब थे, तो मैं अपना गाड़ी को लेके एकदम शान में चला. लेकिन मैं अपने फ्रेंड को लेके उसको गाड़ी खरीदना था, BMW. पहला गाड़ी खरीदेंगे BMW खरीदेंगे, ठीक है? तो मैं गाड़ी खरीदने गया हूँ, तो आई सॉ के चारों तरफ से BMW. So I didn't got much of a respect, and he bought the BMW 3 Series. Then इसके cut to after 6 months.
अब वो बोला मेरे BMW में तुमको लेके चलो, तुम अपना गाड़ी में बहुत घुमा, आप मेरे गाड़ी में घुमा, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तेल बच जाएगा। तो मैं उसके गाड़ी में गया, वो बोला माय फ्रेंड टोल्ड मी लेट्स पास में ही अपना OSL प्रेस्टीज है, कोलकाता में बहुत बड़ा दुकान है, OSL प्रेस्टीज इज द रीसेलर ऑफ BMW कार्स। सो वो बोला चल BMW के शोरूम में जाके थोड़ा सा इसका इंजन ऑयल वाल थोड़ा बदल के निकल, ठीक है। तो सोचो वहां पर मैं हम लोगों को ऐसा एक थर्ड ग्रेड कैटेगरी के लाइन में खड़ा कर, बहुत सारे BMW से एटलीस्ट लाइक 15-20 इट वाज अ सैटरडे आफ्टरनून, 15-16 BMW करे। तो BMW 3 सीरीज और BMW का छोटा BMW होता है येलो का एक लाइन, BMW 5 सीरीज का एक अलग लाइन, BMW 7 और उसके ऊपर सीरीज का एकदम एक्सप्रेस लाइन। उस दिन समझ में आया कि भले ही मैं होंडा सिटी पकड़ के बहुत कॉलर लूं, बट BMW वालों के सामने मैं गरीब हूं, और BMW वाला भी बड़े बड़े BMW के सामने गरीब। And this BMW in front of the AM is Aston Martin is a garib. So this is the different levels of the consumption slabs have been shown. So when the price, literally you can see, if the price falls, ये डायग्राम बहुत सॉलिड है। देखो प्राइस अगर 30 से 20 हो गया, सो प्योर प्राइस इफेक्ट तुम्हें सिर्फ यहां पर मिल रहा है, क्योंकि ये वाला आदमी से खरीदेगा ही नहीं। You reduce it, you lose these customers. These customers are not even buying it. Now you can't sell a bullshit to all these people. So either you have to create a bigger propaganda or you lose the entire market. And this effect, this particular, ये जो effect आ रहा है, I'm showing it with respect to the yellow. This part, this fall, this is the zone of the bandwagon. क्या समझ में आया? So social influence on demand. अब तुम बोलोगे सर आप अपना मैं 90% टाइम 95% टाइम किससे चलता हूं? स्कूटी। तो मजाक से मैं कभी कभार बोलता हूँ आई बॉट माई होंडा टुडे because I got a Honda Activa. So both belongs to Honda, but you can see the status symbol is very different. So now something which is very personal I'm sharing with you. So when I am going with the scooty, मेरा दिन का खर्चा उतना ज्यादा नहीं है. I don't have to go to the very good restaurant and all. Okay. I can street food खाने के लिए रुक गया, ये वो मुझे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपने एरिया में एक मुस्लिम जोन में घुसना मुश्किल है, यहाँ पर बहुत भयंकर मार्केट एरिया है, वहां भी स्कूटी लेके घुस के एक बेकार से दुकान में खा सकता हूँ. द मोमेंट आई एम ऑन होंडा सिटी, तो जा नहीं सकते, यहाँ गाड़ी खराब हो, आई बिहेव वेरी डिफरेंट. Even it happens with me because I am a very rare user of the car. Okay. But it still happens with me. So if I'm inside the car, I feel like, okay, I'm super comfy, you know. सबके लिए मैं नीचे नहीं होता. स्कूटी में तो यही बात. Clear? So here, this is the word called conform to the crowd. So if you fall with the price, then you're confirming that you are nothing, behaving like a crowd. So which is called a bandwagon effect. Is it clear? So the case of this is called a positive networking externality. Externality मतलब तुम खुद से नहीं कर रहे हैं, it's happening. और मेरे घर के पास में म्यूजिक बज रहा है. If I like the song, positive externality, मुझे बजाना नहीं पड़ रहा. If I don't like it, it's a negative externality. So same thing can be distinguished into two parts. नेक्स्ट इसके बाद एक और पैरेलल इफेक्ट क्या है? स्नॉब इफेक्ट. ठीक है. स्नॉब इफेक्ट का डायग्राम देखो. डिमांड कर्व क्या है? नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ये जो लाइन से इफेक्ट दिख रहा है ये मेन है. ओके. এই তো এই লাইনটা দিয়ে আসছে. This is the consumption slabs again. Okay.
unlike positive externality where others consumption increases individual utility, यहाँ पर क्या होगा? Snob effect diminishes utility where too many others own it. Utility falls if two others own it. समझ में आया कि नहीं? सब लोगों के पास जो प्रोडक्ट है, हाँ वो कौन लेगा? है ना? That's why you are ready to buy a lighter of Zippo. पता है Zippo का लाइटर का दाम कितना है? कितना है? मैंने जिंदगी में 3 खरीदा है. क्यों? एक बार the first girl whom I loved, she is like a chain smoker. Chain बोलना नहीं, rod smoker type. तो उसको क्या ही गिफ्ट दे सकते? यही दे सकते हैं ना? और don't give me that logic कि सर you should have stopped. ठीक है? रिश्ता ही स्टॉप हो जाता है अगर एक बार भी बोल. So first time अपने ट्यूशन का पैसा जमा करके I bought that time Zippo 2-2.5 हजार में मिल रहा है. देखो 2-2.5 हजार कुछ भी गिफ्ट दे, Zippo लोग फेंक नहीं सकते. So स्नॉब में क्या एक स्पेशल चीज बताता हूँ, which I realized with respect to my personalized research. If you buy an expensive lehenga, everyone buys an expensive lehenga. So at least level wise, मतलब एक गरीब आदमी भी जब लहंगा खरीदता है, he is expecting के नॉर्मल खर्चे से ज्यादा मेरा होगा. That is not going to give you the snob effect. But if you buy a shock, पैरों में पड़ने वाला मोजा of 5,000 rupees, that is giving you that snob. Yeah? आंखों में चश्मा, ये मेरा फ्रेम 400 रुपए का है, कांच 9,500. क्योंकि मैं आंखों का बहुत सारी चीजों में करता रहता हूँ, सारा दिन कंप्यूटर के सामने, इसलिए मुझे फ्रेम लोगों को दिखाना नहीं है. रेबैन का फ्रेम है, इसका फ्रेम है. Logic clear? So it is not a snob effect for me. It's a requirement, you know. But when it becomes a snob effect, जब यहाँ पर Ray-Ban लिखा है, it's not. But even Ray-Ban is applicable for everyone. You can buy. So this is people call a snob effect if you go for a customized Ray-Ban. You know? And what distinguishes a Brad Pitt iPhone with your iPhone? If both are same, so they put some diamonds. कवर में भी डायमंड डालते हो. Okay. So the products sometimes in the magazines when they come and it's written price on demand, are they catering to people from that bracket? Yeah, price on demand means अगर आप पूछेंगे तभी हम प्राइस बताएं. Correct. That means it's very. That means it's very price high. Yes. Okay. And ऐसा भी दिखाना चाहता है, we don't sell it to everyone. It's a perfect snob effect example. जैसे price on demand का क्या example देंगे? If you go and if you see a Ladro doll, Ladro is a Spanish company which makes phenomenal quality with an extra ecstatic and really crazy level of detailing, level of porcelain dolls. I happens to have 2 of them, which is a second-hand product. Don't take me. So, ये Ladro doll is a perfect example of a snob. There's a detailing, but who knows? Or the same thing is buying an original painting. You can make a replica. मेरे घर में मोना लिसा है, original थोड़ी नहीं. Okay, but still, I try to buy original paintings of normal people. That gives me an internal snob effect कि भाई मैंने original painting खरीदा है. Okay, so that's why painting का दाम है photograph का. कभी सुना है photograph का दाम करोड़ों में है? Even is not that old. So this is a negative externality. Yeah. Pure snob effect is here in this particular case 2 quantity and 8 quantity. Is supposed to buy this 14 level of quantity. The moment is happening, you see the demand is falling. This is not the demand curve.
This is not the price slab. So the snow effect is saying that the fall in the demand due to this snow effect is happening due to this part. इसके ऊपर और वो नहीं जाए. But if you increase the price to this level, then he tries to go for this thing, and this is the snow. So the net effect is this area. ध्यान से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्राइस $30,000 है, तो इसका मतलब डिमांड एकदम हाई है. The moment price falls to 15 or less, so the demand is, in this case, the price effect is also reducing. Although some people obviously goes for it, but that is this type of people. But here the snobbishness comes with a higher level. So yellow with the demand curve to order sleep. That is the demand curve. उसी से तो ये पता चलता है. बोलते ना, it's like very snow. उसे न्यूज़पेपर भी कॉस्टली वाला चाहिए. हाँ? हेलो? हाँ? ঠিক আছে, আস্তে আসবে না, আসবে না করবে, ছেড়ে দাও, আমি বারবার ফোন করবেন. एक नया टीचर आए हैं, एक्चुअली he doesn't know online and all, but he's from IIT. That's why the problem. Anyway, इसके किसका है? Marginal rate of technical substitution का डायग्राम. Okay, this is a diminishing MRTS, initial MRTS से ये कैसे फॉल कर रहा है. यहाँ पर भी ये जो कर्व है, इसको क्या कहेंगे? The curve shows isoquants at all points and represents the equal output and different combinations of capital and labor. मतलब K और L का different combo लेके आउटपुट अपना एक ही प्रोड्यूस हो. यही है ना? MRTS का मतलब क्या है? माइनस DK बाई DL. ओके, ये ऊपर में कैपिटल माप रहा है, इसीलिए इसको ऊपर में रखा है. उल्टा मापोगे तो उल्टा भी लिख सकते हो. अच्छा, ये A से B से D से E तक क्या हुआ? क्या हुआ? डिफरेंट आउटपुट, सॉरी डिफरेंट इनपुट कॉम्बो, लेकिन आउटपुट से. ABCDE ये 5 में डिफरेंट इनपुट कॉम्बो है, लेकिन आउटपुट सेम है. ठीक है, तो इंडिया कौन सा को लेगा? इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री, तो इंडिया विल गो फॉर हाईली लेबर इंटेंसिव थिंग. इंडिया उल्टा करने का कोशिश करता है, कैपिटल इंटेंसिव करने का कोशिश करता है, इसीलिए एआई में ये सब के चक्कर में पड़ता है. ठीक है, पर्सनली आई डोंट लाइक एआई. ठीक है, आई नॉट से हेट एआई, बट आई डोंट लाइक एआई. ठीक है, ये ह्यूमन ब्रेन के पावर को ऐसे भी खत्म कर रहा है. लोग तो लेजी थे ही, और लेजी बन रहा है. Sir, like a newspaper article came. A lot of people, when they're talking to AI because they're lonely or they're saying thank you. So when they say thank you, like after a query has been met, we say thank you to AI. They respond with one more sentence that is costing these companies so much money and so much like carbon space also getting generated. It is actually so like now, and they're requesting customers not to say thank you, just stick to, don't even say hello ChatGPT, can you help me? Just ask the question, get the result, and then go away. Because it's costing them a lot of money. हाँ, ये बड़ा सोच है. ये समझ लो, आने वाले 2-3 महीने के अंदर ChatGPT से सभी चीजों में तुम लोगों को जूता खरीदना है, ये सब बैठ जाएगा. Amazon आ जाएगा उसके अंदर. ChatGPT में 3 सवाल पे 5, 14 सवाल, बड़ा सा ऐड देखिए, ऐड को हटाना है, एक और ऐड देखिए, आ जाए. मेरे ख्याल से वो आने आना जरूरी. तब तो हम लोग का देखने का मन थोड़ा कम करेगा. एंड नाउअडेज टीचर्स आर आल्सो डूइंग. लास्ट दिन हम लोग टीचर लोगों को आवरली बेसिस में भी पे, तो एक टीचर ने मुझे कभी रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो एक टीचर ने मुझे दिया 56 घंटा 14 मिनट. ठीक है, ChatGPT ने गलत प्लस किया है. इट वाज एक्चुअली मोर देन दैट. बोला सर ये आपने पास खुद से किया? बोला हाँ. फिर से कीजिए तो, ओ सर ये तो ज्यादा है. बोला आपने ChatGPT से किया ना ये प्लस.
So it's like ruining this thing. अब ये गलत किया है इसलिए सर का लॉस हो जाता है, मेरा प्रॉफिट हो जाता है. That's a different story. But even if a professor who does the sum and everything in the class directly, why he has to add this thing hours? Because it's not that he can't add it, he just don't want to add it. और सोचो इससे उनको पैसे मिल रहे हैं, ये एडिशन करने में क्या जाता है? That's why my mom doesn't use a calculator. She does all the calculations of घर का खर्चे का सारा calculation वो खुद करती. Then when calculators came, people used to say, "Oh, it's going to make people's brains lazy." It happened. Now we have calculator on the phone and the laptop. We are asking AI to work calculator. Yeah, because we are super lazy now. अच्छा अच्छा, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है? एमआरटीएस क्या हो रहा है? हाई और लो. एमआरटीएस इज हाई, क्योंकि यहाँ क्या ज्यादा है? के ग्रेटर देन एल ना. इस जोन में क्या है? एल ग्रेटर देन के. सो एमआरटीएस इज. तुम लोग एक्सप्लेनेशन में डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन को कहानी की तरह लिख देते हैं. कहानी लिखना कोई नहीं पढ़ता. मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता. मैं पहले देख लेता हूँ ये कहानी. एमआरटीएस मींस एज इन. एमआरटीएस के बारे में 2-4 लाइन लिखेगा, 5-10 लाइन, आधा पेज उसी में. ठीक है, तो मैं एमआरटीएस के चक्कर में पढ़ता ही नहीं. ओके अच्छा, लेबर और कैपिटल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है नहीं, इसलिए ये एप्लीकेबल. ठीक है, चलिए आगे बढ़. अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हुआ तो दिस इज द डायग्राम. क्या हुआ? এদিকে দেখো, চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে কেন? এসিতে সিনেমা করলে কি সুবিধা, এসির দিকে তাকিয়ে দেখবে এমনি চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে. ন্যাচারাল টিয়ার্স. Perfect substitutes. Q1 and Q2. Not with respect to associate with the previous graph. This is actually IC for PS. How will the indifference curve look in case of perfect substitutes? So this is the indifference curves actually, and this is curves are parallel. Meaning, क्यों parallel क्यों? Because the rate of substitution remains constant. अब तुम्हें लगेगा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट ही तो रहेगा, है ना? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मींस ये 2 यूनिट को ये 2 यूनिट परफेक्टली कर दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ इसके 2 यूनिट को परफेक्टली मैं 3 यूनिट से कर सकता. दैट विल गिव मी सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी. इसका 3 यूनिट को मैं इसके 5 यूनिट से कर सकता हूँ. दैट इज गिविंग परफेक्ट द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी. गेटिंग द लॉजिक नाउ? दे आर नॉट द सेम. They are perfectly replaceable by each other, but the ratios may differ. है ना? मान लो I like dark chocolates. ठीक है, तो डार्क चॉकलेट में मेरे पास ऑप्शन क्या है? पहले आता था अमूल. जब अमूल हमारे गरीब लोगों के लिए चॉकलेट बना, 80 रुपए का 90 रुपए का अमूल आता था, और ऐसे नॉर्मल दुकानों में 10 रुपए का डिस्काउंट भी देता. 70 या 80 में हम लोग अमूल खरीदते थे. और ये 10 साल पहले का बात नहीं कर रहे, 5 या 5 साल. फिर अमूल का चॉकलेट डिवीजन का मालिक बदल. Means there's a new CEO came into that chocolate division, and he thought Amul has reduced the price. Maybe that's why people are not buying it. Let's increase the price to 180 and 190. But Amul was a good chocolate, but it was never available. तो दुकान में मिले तो हम लोग दो खरीद लेते, you know. और तब ऐसे फ्लिपकार्ट जोमेटो ये सब उतना अच्छा नहीं. फ्लिपकार्ट से पुराना चॉकलेट आता तो हम लोग डर से नहीं खरीदते. So it was not for the price lowness, but the availability was बिल्कुल गोबर जैसा availability. That's why no one is buying. And now when it is 180 and 190, Amul is now available at all the sophisticated airport stores.
जहां पर में लिंक टॉपलेरॉन के साथ अमूल आता है, but no one buys it. So still the story is same, because Amul is not an elite people's brand. ये पहले समझ, it's like a normal people's brand. You cannot increase the price. So then you got a dark chocolate can be replaced by another as Cadbury Bonfire. Now Cadbury, most of the people don't like. इतना खा चुके हैं बचपन से, there is not nothing difference in the taste. So there comes Galaxy. They suddenly is making it so very available everywhere. They are creating. So I made a small survey on this perfect substitutability. So do you think Galaxy कहीं से भी order कर सकते हैं? Answer is no. 156 gram and it is available in 110 gram. The 56 gram bar is costing around, I think, 120, and this is around 220. This is in general available in around 90 to 95, and this is available 175 to 195 in this range. Okay. So this 175 is available in two only: Swiggy, Instamart, and Zepto. Sorry, in Blinkit. बाकी सभी में ही जितना ऊपर उठ रहा, big basket and all. So whoever are relatively lagging with respect to the promptness of the supply, the substitutability of the product is also full, and they are paying. There you are ending up paying more. They come slow, and that's the scenario. Okay, basic clear. So although the product quality is same, but as the price differs from one market to, even it's not a different market. The online market, ये जो theory, this is not an economic. There are no economic theories on the online markets, right? Do you read कि online घर में आ रहा है? Okay, so let's proceed to the next one. This is the exactly opposite perfect complement ICs. ये तो आप लोगों ने देखा ही है. There is no extra explanation required in this. ये एक kink है, kink. ये है किंग. किंग एक और है स्वीजी डिमांड का मॉडल में भी किंग डिमांड का मॉडल है ना, स्विगी नहीं है, ऑल स्वीज. सो किंग डिमांड का मॉडल, ये किंग से क्या रिप्रेजेंट होता है? ऑप्टिमल रेशियो. ये रेशियो में बेस्ट चलता है, जैसे जूता 1:1, दैट्स द ऑप्टिमल रेशियो. ठीक है. रजनीगंधा तुलसी, also an optimal ratio. अरे रजनीगंधा तुलसी क्या होता है? रजनीगंधा का पैकेट बड़ा होता है और तुलसी का पैकेट आता है छोटा में. तो हमारे मामा जी खाते हैं, मतलब खाते थे, अब नहीं खाते. तो ये रजनीगंधा का बड़ा पैकेट है. दिस वाज लाइक अ बिग पैकेट, 60, 70, 80 रुपए का पैकेट. लेकिन ये रजनीगंधा के पैकेट में तो तुलसी को मिक्स नहीं कर सकते, तो वो तुलसी के पैकेट में रजनीगंधा को मिक्स करके खाते हैं. कोई कोई लोग इससे भी हाई फाई, वो लोग अपना ही थ्योरी बनाते हैं. वो तुलसी का भी इसके हिसाब से रेशियो लेता है, और तुलसी बड़ा पैकेट में नहीं आता, फिर शायद आता भी था, आई डोंट नो. सम ऑफ द रिच पीपल यूज्ड टू गेट इट, सो दे यूज्ड टू मिक्स एंड दे मेक देयर ओन. बट नॉर्मल पीपल लाइक माय मामा जी, सो दे यूज्ड टू मेक इट दिस रेशियो. तो उनके लिए ऑप्टिमल रेशियो था क्या? 1:2. ये ऑप्टिमल रेशियो. वन बड़ा रजनीगंधा विद 2 स्मॉल तुलसी. ठीक है. So it doesn't mean always a 1:1 ratio. Let's देखो, हम लोग को जब भी कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल दिया गया 1:1 का एग्जांपल दिया गया, और what happens if it's a different story? In that case, the king point will differ. King point will differ means ऐसा भी हो सकता है, या फिर एग्जैक्ट 45 डिग्री में भी ऊपर जा सकता है. 1:1 वाला ऐसे ही है. This is actually a more towards Q, less towards this. जैसे इस पॉइंट में हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, this is the equalization point in rather say, but अगर मूवमेंट के हिसाब से अगर जाएगा तो ये पॉइंट में ज्यादा नहीं है वैल्यू, बट हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस मींस हायर लेवल ऑफ, मतलब मामा जी को अगर
4 दिन में ये मिलता था, 8 मिलता था, बहुत खुश रहते, है ना? नहीं, ये तो मुंह में कैंसर हो गया, ये हो गया, ये सब अलग बात। ये एक है, ये एक अलग सा आईसी, इसे क्या कहते हैं? गुटखा या फिर शराब या फिर बैड, बैड फॉर द सोसाइटीज आई, नॉट फॉर देम। या फिर फैंटानिल, जिसको लेके अभी यूएस इंडिया के बीच में चल रहा है ना? फैंटानिल पता है क्या है? हम लोगों को सब ज्ञान मुझे ही देना पड़ेगा। फैंटानिल इज अ ड्रग का इनपुट है, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रग। तो फैंटानिल सबका बाप है, समझ। सो क्रैक, स्मैक, एलएसडी, ये सब में जो कॉम्बिनेशन आता है, उसमें जो किक मिलता है उससे काफी हाई लेवल का, वेरी कॉस्टली, वेरी, मतलब इसका India supplies to them. We buy from them. I don't know, it's a different story. You can see, check it on the internet. You can't waste time on this. Okay. And very recently there is a TV series on fentanyl also. वो कौन है? फरहान अख्तर का माँ का नाम क्या है? शबाना आजमी. She is in that. Okay, डब्बा कार्टेल. मैंने सोचा था शुरुआत में ये शायद कुछ ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं, फिर देखा हाँ सच में बड़े लोगों का नशा है भाई. अच्छा है, बड़े लोग जितने बढ़ेंगे अच्छा है. हमारे पैसे लेकर ही तो बड़े बड़े. The society always believes, the Marxian society always believes that everyone started their career and being born with an equal amount of wealth. Then the inequality created, that's why the ये जो हम लोग देखते हैं ना, learner index, okay, so the Giffen and Gini coefficient. So the Gini coefficient, the income inequality curve of India is just like this. When it comes to the Finland, the income inequality curve is just like this. It's not that thing that everyone is very rich, but the index wise, there's कभी सुना है फिनलैंड का इकोनॉमी दुनिया का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी में नहीं आता. जापान की तरह ही तो छोटा ही कंट्री है. जापान थोड़ा अलग तरीके से काम करता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द बैड, दिस इज कॉल्ड अ गुड एंड अ बैड, गुड एंड बैड. जैसे दूध वर्सेस बियर, दूध का दाम कम है, बियर का दाम ज्यादा है, ठीक है? या फिर फ्रूट्स वर्सेस पिज्जा, ठीक है? कभी आज तक मैंने कोई यूथ को ये बोलते हुए नहीं सुना, अरे सर दोपहर में लंच में क्या करेंगे, फल फ्रूट के दुकान से खरीद लेंगे, फ्रूट खाएंगे. तो जो 200 रुपए का फ्रूट खाने से पेट कितना भरेगा? 30 रुपए का एक वाटरमेलन से पूरा दिन चल जाता था मेरा. मेरे पास पैसे नहीं थे अलग बात है, जब ट्यूशन पढ़ाते थे, कॉलेज से ट्यूशन, ट्यूशन से कॉलेज, इन दैट वे व्हेन आई यूज्ड टू डू इट, सो दैट वाज द ओनली थिंग आई यूज्ड टू डू. और बोलता तुम यहाँ बैठ के पूरा खा लेगा, हाँ, वाटरमेलन खाना कौन सा बड़ा बात, और एक पूरा वाटरमेलन 30 रुपए में मिलता है. ये सुन, तुम्हें क्या पता, तुम मार्केट से भी कभी गई है? এটা তো লোক লাগে বাজার জানে বাড়িতে. কখনো গেছো বাড়ির জন্য বাজার করতে? इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्नॉब इफेक्ट. हाँ सर, ये हाँ, क्या बैग ही खत्म हो गया वो खरीदने? 16 केजी का बैग लेके कभी आई हो? I didn't read it, but yeah, but शॉपिंग बैग नहीं बोल रहा. मेरा बजट ही करते हैं. गुड, किया है तो अच्छा है. So the thing is that he prefers more of good. So we cannot say that all the points on the indifference curve are same level of beauty. Okay, so less of x, more of y gives you more utility. Yes or no? Less of X and more of Y. Yeah, gives you more utility. Y is a good and x is A bad. Okay. So this is the consumption slope. MRS क्या होगा इसका? dy by dx
greater than 0. अच्छा, कर्व स्टीपर या फ्लैटर कब होगा? When the degree of aversion to bad increases. तो इसमें क्या होगा? स्टीपर हो जाएगा? नहीं. हाँ. But aversion means, degree of aversion to bad means Not wanting bad. so he's trying to take this thing away. जैसे मैं जानता हूँ मेरे लिए पिज्जा खाना जहर खाने के लिए, तो लेकिन कभी कभार ऊना पिज्जा रियो जब 600 रुपए का पिज्जा 250 में देता है और ऊपर से 550 रुपए का 2 फिश एंड चिप्स, इतना बड़ा बड़ा फिश फ्राई, जब 125 रुपए में आता है तो मेरा इंडिफरेंस कर थोड़ा ऐसा हो जाता है, रिलेटिवली फ्लैटर हो जाता है. Then I'm becoming more inclined toward bad. In case you don't know, Una Pizza is an American brand of pizza. कोलकाता में they have opened a shop. In generally हमारे जैसे गरीब कंजर लोगों के लिए नहीं है. बाहर बोर्ड लिख के रखता है, dogs and poor people are not allowed. ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे ही लगता है, सच में नहीं लिखता है. और उसका इतना हाई फाई एरिया, एक तो एरिया हाई फाई है, ऊपर से इतना हाई फाई बना के रखा है ना, जाके हम लोग अगर पूछे मान लो, सर यस सर टेल मी व्हाट यू वांट, नहीं थोड़ा खाना ओके, जैसे दे शुड आस्क मी, अच्छा आप आपका इनकम टैक्स का थोड़ा सर्टिफिकेट दीजिएगा, आप कितना टैक्स भरते हैं, उसके हिसाब से आपको पूछने देंगे. यू फील वेरी बैड ओवर देयर. ठीक है, और आपका बिल अगर 3 डिजिट में हुआ उस रेस्टोरेंट में, दे विल से प्लीज डोंट कम, ये पिज्जा ऑर्डर करके आपने वेट कर दिया. Whatever, my point is then my inclination towards bad is higher. तो मैं जब वहां पर स्पेशल डिस्काउंट चलता है 50-60% का, पता नहीं क्यों चलता है, कब चलता है नहीं, अरे मुझे भी नहीं पता चला, मैं पिछले 2-3 महीने से मैं स्विगी डाउनलोड करता हूँ सिर्फ ये देखने के लिए. दिस इज अ ट्रू स्टोरी, सिर्फ ये देखने के लिए उनो पिज्जा रियो में डिस्काउंट आया कि नहीं आता है, फिर मैं डाउनलोड ऑफ कर देता क्योंकि मैं कुछ और ऑर्डर कर दूंगा. इट्स वेरी हार्ड टू स्टॉप योरसेल्फ. ठीक है, ये क्या है बोलो? दिस इज अ इंडिफरेंस कर्व ना, लेकिन किसके लिए? रिस्कीनेस एंड एवरेज रिटर्न. तुम कोई भी म्यूचुअल फंड में देखोगे तो म्यूचुअल फंड ऐसा एक कांटा की तरह देता है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, ये रिस्क, हाई रिस्क, ऐसे. जिन जिन लोगों का रिटर्न 20-22-25% ये सब ये लाल के अंदर आ, मतलब रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, वो 25,000 में आ गया और 25 में ही रह गया. तो हमारे जैसे रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हम लोग क्या जाते हैं, हाइब्रिड. भाई ज्यादा मिले ना मिले, 8-10% मिल जाए बहुत है. 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का इन्वेस्टमेंट होगा. ठीक है, so obviously riskiness increases with respect, riskiness falls with respect to time. 20 साल में इन्वेस्ट करूंगा तब तो लोग कम से कम डबल करके देता ही है. 20 साल में तो डबल होता है, लेकिन कोई बोलेगा 2 साल में डबल करके देंगे, तब थोड़ा डर लगना चाहिए. सो दिस इज द बेसिक थिंग आई हैव ड्रॉन. लेकिन यहाँ पर IC4 इज अपवर्ड बट अब वेरी रिलेटिवली क्या कर्व है, ये वो वाला कर्व है, ध्यान से देखो, ये वाला कर्व है. So here I'm partaking the average return as a good thing and risk is as a bad thing. So ये good and this is the bad. मतलब मुझे रिटर्न हाई चाहिए लेकिन रिस्क भी नहीं. But what if a person looking for a very bright, very classy, good height, super sophisticated, English speaking bride or groom, and expecting that the person will be so down to earth. He has never had a boyfriend or girlfriend, except you have never seen anyone in their life. And he will be completely loyal to you till the last day of his or her life. Isn't it a very high expectation? Bhagavan bhi expectation nahi kare.
So either you leave that man or woman and go for a relatively okay kind of a person, यहाँ पर दोनों balance में रहेगा, or you go for a high stake. So if I go for average high return, then it's risky. You know? There's a famous joke on this. As all of you are adults, so I can share this joke with you. So a man is a very rich person, okay, and he's trying to find a bride for him. Okay. So he has given away all his all these 3 possible girls whom he is planning to marry is like 1 lakh rupees to invest. One of the girl invests in a share market and makes it, and she says that it will be doubled within this year. It's a very good thing. Second girl says, I have bought a lot of good things for you. I've invested in you because I love you a lot. And the third girl doesn't do anything. Okay, she keeps the money for herself. Whenever you need, I will give it to you back. So whom the person will marry? Who the person will marry? किससे वो शादी करेगा वो? क्या लगता है? The person ended up marrying the girl who looks the best. This is the joke and this is the reality. Because our socio-economic decision making is completely skewed. Completely skewed. And we take the decision and we always want a relatively average high return. But when it comes to riskiness, we say that we are risk averse. Even the riskiest person say, yeah, I'm risk averse. No one says, I love to take risks. Clear? Next. This is an IC. ये कौन से प्रोडक्ट के लिए IC ऐसे होता है? क्या है? ये न्यूट्रल का मतलब क्या है? जीरो यूटिलिटी या फिर नेगेटिव यूटिलिटी, है ना? So an example of negative utility. अरे जो प्रोडक्ट लेने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम ले रहे हो. Okay. Now, uno pizzarios pizza is not considered as this price. This is not giving me zero utility. This is giving me very high positive utility. Yeah, how is it positive? Forget about the future effects. Yeah. But when I'm consuming this, I know it's giving me the pleasure. है ना? So what will be an example of negative utility? Taking someone else's medicine. And why would you take that? Now, for example, negative utility means serving notice period in an office. Every point you know that there's a better job waiting for you. You can't leave it because then you won't have it. Because if you don't serve this 1 month or 2 months or 3 month time. Yes or no? It's a perfect example of और negative या फिर zero. अच्छा ठीक है, salary तो मिल ही रहा है, ठीक है भाई, कब खत्म? And this is the good utility, means the next job is waiting. So upcoming job, yeah, example there. Okay, and this is the notice period job. अब छोटे जॉब में क्या होता है? People don't serve the notice period. अच्छा, कौन notice period करेगा? मैं भी क्या कर लूंगा? तो हमारे यहाँ पर बीच में लोग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं. The moment the person, लेकिन एक बड़े जॉब में क्या होता है? जब तक लोगों को 10,000 का इंक्रीमेंट ना मिले एटलीस्ट लोग जॉब नहीं छोड़ते. हमारे यहाँ पर में लोगों का सैलरी है कम, तो उसको का 10% हाइक मिले तो 8,000 के सैलरी में 800 रुपए भी हाइक कोई दे दिया तो वो चला जाए. So I can't expect that person to serve it, but still I am doing work with him. But I can't pay him that high. So every time when I take interview, I'm looking for someone better at the same price level, which is a utopian demand. But still I go for it because I don't have any other choice. Do I have it? मैं जानता हूँ 25-30 हजार देंगे तो अच्छा लोग मिल सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं. 1 लाख देंगे तो और भी अच्छा मिलेगा. अच्छा 5 लाख दिया सर,
Because after a certain point of time, that level of people will not be coming to me to work. They will be looking for a world famous organization. They won't work for any Indian organization. So मुझको मैं 5 लाख दूंगा महीने का, that person would have got in that company maybe 5 crore. मार बंद, ऐसा बहुत सारे लोगों का सैलरी तो है रे बाबा, 80 करोड़ रुपए सैलरी मिलता तो है, 80 करोड़ को ज्यादा हो गया, हाँ मिलता है. This time good or normal, and उसी को ही ऊपर में कर दिया तो ये थोड़ा चेंज हो गया. So I'm not repeating this. ये point of bliss है. You guys enjoying? This is like a very different level of diagram, so I'm doing it. थोड़ा सा unusual diagram है. Yeah, obviously. S क्या है? Point of satiation. S equal to point of satiation. Satisfaction level. What is the difference between satiated and satisfied? तो अभी के लिए जितना है उसके हिसाब से ये ही सही है. That's called the satiation structure. But it doesn't mean I'm satisfied. मतलब वही मेरा 8,000, 7,000, 6,000 के एम्प्लॉय में whatever I'm producing, I'm satiated with that. I cannot go beyond this, because if I go and try to fetch it beyond, I have to increase the budget, which I can't do it. Okay. ये अंदर की तरफ जाना मतलब यूटिलिटी बढ़ना, बाहर की जाना आना मतलब यूटिलिटी इज फॉलिंग. तो यहाँ पर ये सर्किल क्या है सर? ये सर्किल, these are the ICs. Okay, so this is the circles are ICs. So minimum IC has high utility. Yeah. So यहाँ पर बाहर जाना मतलब lower level of satisfaction. And what happens if I fire 3 of my employees and सबका salary मान लो 6,000 है, and I pay one of the employee 18,000. A good employee, I get it. A lot of people tell me, don't take these values as original values. It's like it fluctuates. लेकिन इसके आसपास है, ऐसा नहीं कि 60 और 1,80,000 बोलूँगा. So this is the thing. So why I don't do that? Because the type of work here we do, it's a repetitive daily work. It's not an innovative work we do. एक स्टूडेंट आएगा, उसको पोर्टल दो, ये दो, आईडी पासवर्ड क्रिएट करो, उसको दो, फोन करके बोलो, यूट्यूब में समझा दो, फिर कॉल करो, फिर दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यही रिपीट करो. So repetitive work is being hated by a very solid brain. वो रिपीट नहीं कर सकते, उसे इनोवेशन चाहिए. You get bored. तो 18,000 का नौकरी में लोग छोड़ते हैं. Relatively, this less brainy people on a repetitive work-based cycle works far better than these people. But टीचर में यही गेम उल्टा हो जाता है. वहां पर मैं आई कैन नॉट टेक अ लो ग्रेड टीचर, क्योंकि मेरा सारा ही हाई फाई कोर्स, मैं स्कूल लेवल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा. So I cannot take a person who teaches in that. So I have to keep on hiring and paying them as much as it is possible, and maybe more than the market level. Yeah, because IES is a very tough course. Logic clear, eh? Most of the cases, people who studied economics, they don't know mathematical economics. They haven't studied mathematical. In many universities in central India, they have this problem. वहाँ से theory. Economics को art बना ली. But economics is actually a science, completely. That's why the degree is called BSc. Okay. तुम लोगों को शायद पता नहीं, ज्वाइंट देकर भी तुम इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है. IIT खड़गपुर में, कुछ में ऐसे IIT में है. ठीक है. हाँ. डायग्राम को देखो, x and y are both at a less than optimal position. So zone के हिसाब से अगर मैं zone 1 में रहूंगा तो my movement will be upward. If I am a zone 2%, then movement will be low. ठीक है. If I am a zone 3%, then also I'm trying to push towards this. So सभी लोग push कर रहे हैं.
और सभी में ही टाइम टू टाइम ये देखो, दिस इज द ओनली केस एक्सेप्ट व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ जोन 3? जोन 3 का स्पेशलिटी क्या है? क्या हो गया? What is the speciality of zone 3? Zone 3 is the only case where X and Y both are increasing. Zone 3 है ना, ये 4, sorry, zone 1, 4, 3 and 2. So zone 1 is the only case where people are expecting more and more. लेकिन फिर क्यों zone 3 में नीचे जा रहा है? क्योंकि after a certain level of satisfaction people don't want to go over there. नॉर्मल इसीलिए देखो इस एरिया में ही इंडिफरेंस कब नॉर्मल है, एंड हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जोन 1. जोन 3 is higher IC, lower IC gives relatively high level of satisfaction, and both are falling, and 2 and 4 are relatively comparable, है ना? And these preferences are non-monotonic preference. This is a new word I'm giving you, non-monotonic. मतलब ऐसा नहीं कि more is always preferred. Monotonic is one-sided. ज्यादा 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 अच्छा ही लगेगा. दुनिया में एक ही ऐसा चीज है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, and people in general never get bored. What is that? Knowledge. Yeah, knowledge is the kind of a thing. और थोड़ा जान लेते. तो बोला नहीं नहीं सर, ये तो है ये money भाई. The money is the kind of a thing that people never get bored with. Answer is yes. People very quickly get bored with money. After a certain point of money, even a local level people suddenly want to become MLA. So that's why India curve, backward bending. So backward bending lever supply curve is a perfect example of that thing. After a certain point of time, आपको लगेगा कमा तो लिया, खर्चा कहाँ करेंगे? So they try to do it. बट ये सभी के पीछे क्या है? हम लोग कहीं जाते हैं, घूमते हैं, मूवीज देखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं. इवन इफ यू गेट अ गुड फूड ना, योर इनर माइंड इज एक्चुअली वांट टू नो द टेस्ट ऑफ द न्यू फूड. सो यू आर गैदरिंग नॉलेज. Every second you're gathering knowledge. If a person who sleeps around with different girls, or if a girl sleeps, ऐसे बोलेंगे तो फिर लड़कों के ऊपर आ जाएगा. Okay, so if a girl who sleeps around with different boys, so then also there's an inner appetite in order to try out maybe something new. Maybe not physically, but mentally. So the search for the knowledge is in general never satiated. Okay. Except that everything has a very high level satisfaction, relatively upper bound of the satisfaction. Even if a blind person also, then also he wants to hear and all. So janna hai. So what is this optimal level? So this is the optimal level. After that, this is the satisfaction. ये देखो, तुम ध्यान से देखो, ये रास्ते से तुम जाएगा तभी तो ऊपर उठ पाएगा. लेकिन रियल लाइफ में तो तुम कहोगे सर मैं यहाँ जाऊंगी, मैं रुक जाऊंगी, I will stop at this point. But how you know that the optimal point is reached? Is there any indicator? No. And मान लो, if I give you that indicator, that okay, this is the thing, this is the axiom, then you will think that why the sir is giving me that indicator, maybe something hidden inside. He wants to take profit from it. That's why. You're gonna trust me. Obviously, you shouldn't be trusting me. So this is the bliss point scale. Now another IC is there. This is of what IC? This is called a corner solution. Corner solution में क्या होता है? जहाँ solution एक corner में रहता है.
हाँ है, वैसा तो है, लेकिन क्यों? हाँ, यहाँ का कंज्यूमर को क्या पसंद है? ओनली वाई। तो जब कोई कंज्यूमर पूरा का पूरा खर्चा कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर कर देगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्नर सॉल्यूशन। जैसे भी हो सकता था, यहाँ पर ये सब एक से ज्यादा। और म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में कोई लगाता है, कोई इक्विटी में लगाता है, कोई दोनों में मिलजुल के लगाता है, फिर उसमें भी रेशियो मेंटेन करता है ना? तो यहाँ शेप उतना जरूरी नहीं है। शेप डजंट मैटर। देखो यहाँ अब तुम बोलोगे सर शेप तो आईसी का ऐसा रहता है, कॉर्नर में कैसे उसको ड्रॉ करें? सो हाउ कैन यू ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस इन दिस कॉर्नर? तब तो इंटरसेक्टिंग हो। ओके, इट हैज टू बी क्या है? टेंजेंट। as IC needs to be tangent, so we are removing only this section. This is invalid section. And you need a unique point solution. अगर IC भी तुम्हारा इंडिफरेंस कर भी ऐसा, IC भी ऐसे सोते हुए जा रहा है, तब तो इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, आज फिर इतना था कि रहने देते हैं, नेक्स्ट दिन में बाकी खत्म करें। So these are the different type of all concepts which in general need to understand, and many of the cases examinations में भी आए हैं, and we tend to ignore them. ठीक है, आज इतना ही। बैठ जाओ, आज जो लोग घर में हैं